हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ एक्सरसाइजेस जो बिगिनर लेवल है और क्रोमैटिक हारमोनिका बजा रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए, उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दीज आर एक्सरसाइजेस विच आर नॉट वेरी डिफिकल्ट बट विच गो अ लॉन्ग वे इफ़ यू वांट टू improve or stabilize your chromatic harmonica skills and also have more familiarization with the instrument. और एक इन एक्सरसाइजेस का ये भी रोल रहता है कि टाइमिंग पे ये आपकी जो पकड़ है उसको ज़्यादा मजबूत करती है। और ये भी इन एक्सरसाइजेस का एक काम है कि आप टाइमिंग पे और बेटर ग्रिप रख सकें। तो ये है मेरा इंस्ट्रूमेंट, ये है एक ई स्टॉप 12 क्रोमैटिक हारमोनिका। ये दिस वन इज़ इन द की ऑफ ए। सो आई विल स्टार्ट विथ probably actually there are multiple exercises but we are probably not going to discuss all of them within the scope of this video। हालांकि मैं आपको दो एक्सरसाइजेस या मे बी 3 एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। तो पहला एक्सरसाइज जो है वो एक्चुअली बहुत ही सिंपल वाला एक्सरसाइज है। ये अलंकार जो है ये वोकल म्यूजिक में भी दिया जाता है, बहुत ही ईजी है। सा रे गा रे गा मा पा पा धा पा धा नी सा एंड बैक, राइट। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू कीप गुड टाइमिंग, सो इट हैज़ टू बी लाइक दिस। आई टैप माई फीट, तो आपको शायद सुनाई भी दे, तो हैव अ गुड आइडिया ऑफ वॉट वी आर गोइंग टू डू। फॉर एग्जाम्पल, सा रे गा म प म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा रे गा म। सो टू गो लाइक दिस, राइट। तो ये पूरा एक्सरसाइज जो है यहाँ पे 12 बीट्स में कंप्लीट होता है। 6 beats up and 6 beats down, 6 beats for ascent and 6 beats for descent. So I'll play it for you. तो ध्यान दीजिएगा कि एक्सरसाइज जो है वो स्मूथली बजे। Of course, tongue blocking is a prerequisite, so I'm assuming that you already know how to tongue block. If you do not know how to tongue block or how to use the technique to play harmonica, तो टंग ब्लॉकिंग में मेरा एक पूरा वीडियो है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वाला वीडियो थोड़ा विजिट करें और थोड़ा फेमिलियर हो ले टंग ब्लॉकिंग से बिफोर यू वांट टू अटेम्प्ट दिस एक्सरसाइज। सो जैसा मैंने बताया, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव अ वेरी गुड फ्लो एंड अ स्टेडी फ्लो एंड टू कीप गुड टाइमिंग, राइट। सो ऐसे ही एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। मैं एक बार फिर से बजाता हूँ एंड देन द नेक्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू टेक, राइट, not at the beginning but after practicing it for quite some duration, is to try and increase the speed of the exercise a little bit, which is like increase the tempo, right? The musical word for it is tempo. तो जैसा कि आपने देखा, मैंने दो चीज़ें यहाँ पे की। एक तो मैंने स्पीड को इंक्रीज़ करके बजाया क्योंकि दिस इज़ अ स्पीड विच आई कैन मोर और लेस हैंडल। और दूसरी चीज़ मैंने ये की कि आई ऑल्सो एक्सटेंडेड द एक्सरसाइज 1 octave lower so that to cover the first 4 holes of the chromatic harmonica as well, right? So this is another thing which you can incorporate in the exercise later when you have become comfortable in playing the exercise in the middle octave only. तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, this exercise is of prime importance in chromatic harmonica. This is an exercise in legato or a practice in legato. अब legato क्या चीज़ है? अगर आपको legato के बारे में पता करना है तो you can go to the internet and you can search with the term legato. There are two very commonly used terms. One is staccato, which is a jumpy or jerky style of playing, and it is intended. There are applications for this, especially in Western music or in Western classical music. The other style, which is a flowing style of playing music, right, where you will have a smooth flow and a connected nature of playing between notes as you move between notes. So that is called legato. ये इस legato का इंडियन म्यूजिक में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। इंडियन म्यूजिक में एक्चुअली स्टैकाटो का एप्लीकेशन थोड़ा कम है।
लेगाटो का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है. एंड आवर इंस्ट्रूमेंट बीइंग अ विंड इंस्ट्रूमेंट एंड बीइंग अ continuous blow instrument or a continuous draw instrument, that is, it is able to produce a continuous note, like not like continuous note and not like maybe acoustic guitar जहाँ पे आप एक स्ट्रिंग को प्लग करते हैं और जब तक उसका रेजोनेंस रहता है तब तक नोट रहता है, उसके बाद जो है नोट डाई डाउन करता है, डाई डाउन कर जाता है. यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे यू विल बी एबल टू सस्टेन अ नोट एज लॉन्ग एज योर ब्रेथ supports it. You'll be able to blow or draw into a note and you'll be able to sustain the note for longer duration. So the exercise which helps you learn the legato technique is the saga rema exercise. So again, the exercise is kind of simple. It is like you skip one note and you catch the next note, right? And the window keeps shifting. So the exercise goes like, in the ascent it goes like sa ga re ma ga pa ma dha pa ni da sa, and then it comes back like sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa, sa ga re ma ga pa ma dha pa ni da sa, sa dha ni pa dha ma pa ga ma re ga sa, राइट. सो ऐसे ये एक्सरसाइज जाएगा. अगेन इस एक्सरसाइज को आपको जो बजाना है, मैंने बोला कि लेगाटो टेक्निक यूज़ करना है. व्हाट दैट मीन्स इज you should not be playing like sa ga re ma. That's not what we are going to do. Of course there are uses for it and those are kind of applicable in western music, but for this particular exercise right now what we are going to follow is play the 2 consecutive low notes in one blow. That's the most critical part of it for practicing. This is not how we will play. This is how we will play. Okay, so this is how you go about practicing the exercise. पहले आप इसको स्लो रखेंगे at a much lower tempo or a moderate tempo, and you'll try to get a good grip over the exercise. That is, play consecutive blow notes in one blow and consecutive draw notes in one draw. Okay, without any gap between the notes. Sa ga sa ga sa ga sa ga. Similarly, I'm only moving the instrument. I'm not stopping my blow or draw in between the notes. I'm not doing like, what I'm doing is okay. So this is how you do it, and gradually you increase the speed. Ideal is, if you have a good grip on timing, you should be able to just double the tempo, but that's not easy. That's not easy, and you need some good background in timing. So but what you can do is you can gradually increase the speed of your metronome or whatever is the rhythm keeping device for you, and you can, for example, gradually increase the speed of the metronome from 60 to 75, 75 to 80, 80 to 85, 85 to 90, and thereby you can go. अब ये लेगाटो का एप्लीकेशन जो है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ. तो जैसे ये गाना है, बंगाली सॉन्ग है, रविंद्र संगीत, मैं आपके लिए थोड़ा प्ले करता हूँ. इस पर आप देखेंगे देयर आर 2 phrases. The phrase one is like pa re ga ma pa. That's there in this song. The second phrase is like sa ma ga pa ma pa da ni sa re sa ni. And what's important is you have to notice how flowing it is, or how flowing I am trying to make it sound when I am playing it, right? And that's the application of legato in our instrument, that is in mouth organ or harmonica. I'll show you a little bit. Pa re ga ma pa re ga ma pa. Re ga ma tha pa ma ga ma re sa, sa sa ma ga ma re sa. Now so this is the application of the technique, right? I'm just moving my instrument smoothly between my lips, and I am switching in a manner between the notes so that the gap is
almost negligible or not perceptible to the common listener, right? So I'm just masking the gap, and this is the effect of legato. This is the flowing style of playing music, which as I said, is very useful in Indian music. Okay, so these were the two exercises which I wanted to share with you, and which are going to be very useful in the beginning stages when you are learning the chromatic harmonica. Okay, so now before closing, I want to share with you another exercise which you may say is a bonus exercise. Um, this exercise is a little bit difficult because the timing of it is not very simple or not very commonplace. It's in 5/8, और अगर आप हिंदुस्तानी संगीत की भाषा में बोले तो ये 5 मात्रा में है. द एक्सरसाइज इज काइंड ऑफ सिंपल बट इट गिव्स यू टू थिंग्स. वन इज very a better grip on timing, and then also it gives you a good grip, a better grip on the instrument where the different notes are. The exercise is very simple. It's like sa re ga ma pa ma pa da ni sa ni da ni da pa ma ga re sa. This is how you go. Okay, so it's like so this is how it goes. Okay, last thing, whenever you are practicing any of these exercises, please make sure you're able to play repetitions of the exercise without stopping in between or without taking an indefinite break or an unmeasurable break between two iterations of the exercise. Whatever exercise you do, ascent descent without stopping for at least some iterations, right? This is also going to improve your hold on the timing. Last but not the least, if you want to join classes with me, right now I'm accepting some students, so you can probably WhatsApp me if you want, and we can discuss. Thank you for watching and for your attention. I'll probably see you in another video very soon. Thank you.